Hello, today I'm going to tell you one new topic and we'll practice in this topic about circulism because we have already done this tonal hatching technique. Now we are going forward and today I'm going to tell you one new technique, that is circulism, as you already knew, but today we are going to apply circulism in one circle. Okay, this is circle. You have to draw roughly. Okay, this is so simple. What you need to do, I'm telling you again how you can draw a circle. Just simply use very light pencil, as I'm having here 5B right now in my hand, but I can control the pressure, so I'm just using 5B. Otherwise you can use HB for drawing. The main thing is that you should know how to put reference lines. The line, this light line is called reference line. We use reference line to draw something because in this way we don't have to use a lot of eraser, or you can redraw it because the lines are very light. You can easily remove it or easily do editing on it. Okay, so this is the circle. Okay, you can draw like this. Simply just try to move your hand in a circular direction like this. Okay, now here we are going to apply circulism here, but how? Okay, so first thing, what I'm going to tell you about lights. How light works in our object. Suppose this is your object. Like if we put an object, any object, and the light source reflect on it, attack on it, so it give reflection on the other side. लाइक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जहाँ जहाँ से लाइट की सोर्स आ रही होती है उसके ऊपर जब पड़ती है, जब उसके ऊपर अटैक करती है, तो वो पड़ के लाइट अटैक होके दूसरे साइड पे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे शैडो बनाती है. ठीक है, जैसे कि मेरी लाइट यहाँ से आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ लाइट लगाई हुई है, तो यहाँ लाइट इसको लगी और यहाँ इसका शैडो बना. मज़ीद दिखाने के लिए मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेती हूँ और मेरा मोबाइल यहाँ पर है. जैसे जैसे मैं मोबाइल को मूव कर रही हूँ वैसे वैसे इसका शैडो मूव हो रहा है. ओके, दूर लेके जा रही हूँ तो शैडो छोटा, एंगल चेंज कर रही हूँ तो शैडो इसका बड़ा बन रहा है. ओके, देखिए कितना बड़ा, क्योंकि मेरा मोबाइल का एंगल, जो मेरी लाइट की एंगल है, वो डिफरेंट है. ओके, जिस एंगल से लाइट पड़ेगी, जैसे बिल्कुल इसके ऊपर पड़ रही है लाइट, अगर देखें ये स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर, बिल्कुल हाईलाइट हुआ हुआ है, तो इसका एरिया में यहाँ पर इसका शैडो बन रहा है. ओके, अब जैसे जैसे लाइट मूव कर रही हूँ वैसे वैसे शैडो मूव कर रहा है. अब मैं बिल्कुल नीचे रख दूँगी मोबाइल तो सी कितना बड़ा शैडो बन रहा है. मेरा मोबाइल यहाँ पर है, लाइट की सोर्स यहाँ पर है और शैडो इतना बड़ा बन रहा है. So it's all depend upon the angle of the light. Okay, कहाँ लाइट पड़ रही है, किस एंगल पे पड़ रही है, उस हिसाब से शैडो बनता है.
Okay, now what I'm going to tell you here, suppose this is the ball and light is coming from this direction. ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही, तो क्या होगा, लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ इसका कहीं हाईलाइट होगा, यहाँ इसकी मिड टोन आएगी, यहाँ इसकी डार्क टोन आएगी, और यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसका शेडो आएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ। इस सर्कल के अंदर हम हैचिंग, टोनल और सर्कुलिज्म तीनों यूज़ करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम ये बहुत यूज़ करते हैं HTC। ओके, सो नाउ हम जस्ट स्टार्टिंग। बहुत लाइट हैंड्स, बहुत हल्के हाथ से आपने शेडिंग करनी है। ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम HB एज वेल। If you can see, I'm using here circulism plus hatching. Hatching is 45 degree, remember, and circulism is circles. इन दोनों को प्लस किया तो ये दोनों बना, ठीक है। ये मैंने सर्कुलिज्म स्टाइल प्लस हैचिंग में इसको मिक्स करके अपने लिए एक रफ स्केच बना लिया है। कि यहाँ इसका डार्कर टोन होगा, यहाँ मिड टोन होगा और यहाँ लाइट टोन होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स पे आ जाएंगे और बहुत लाइटली इसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं प्रेशर ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे लाइट कम होती जाएगी वैसे एरिया डार्क होता चला जाएगा। और मैं यहाँ पे सर्कुलिज्म यूज़ कर रही हूँ। Okay, the paper is Canson sheet, that is why these small grains are very visible. So we try to hide these grains, like if you can see, or otherwise we use the back side of the sheet, and that is called scholar sheet. Okay, जो इसकी बैक साइड शीट है, इसकी बैक साइड, उसको हम स्कॉलर शीट कहते हैं। अगर यहाँ पे हम जब शेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, इसके ग्रेन्स नज़र नहीं आते जैसे इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ठीक है। अब हम अभी हमने इस पे स्टार्ट कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम स्कॉलर पे काम करेंगे, इन्हीं के पीछे शीट के। Okay, you can use any pencil 4B 3B। लाइट स्ट्रोक्स के लिए आप लाइट पेंसिल की तरफ जाओगे और जो डार्क स्ट्रोक्स हैं उसकी तरफ आप डार्क पेंसिल जाओगे।
बट मैं क्योंकि प्रैक्टिस्ड हूँ इसलिए मैं किसी भी पेंसिल से कोई भी स्ट्रोक्स लगा सकती हूँ। ठीक है, और बहुत अभी मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एंड करना है, लाइक इट्स above 10 minutes, so I have to end it. So that's why I'm doing it a little fast, but you have to do it very slowly and try not to put any patch. Try to blend nicely and use all three HTC: hatching, tonal and circularism. As you can see, time to time I'm using hatching, tonal and circularism. Okay, I have changed my pencil to HB. Okay, and now I'm going to add some shading on the upper side where light strikes. So we have to use a very light pencil to show light. And I'm using HB here for you to understand, to make you understand that you have to use HB pencil on the lighter side of the ball and dark pencil on the darker side of the ball. Use a very small strokes, छोटे छोटे strokes use करना है. See, here I am using hatching, but adding circularism in it as well. Here I am using again hatching and just mixing it with the circularism and blending it. Here I have added more pressure because I have to show darkness here, and here I'm using light pressure so that I can show you lighter tone or middle tone. See, I'm using very small strokes to fill the grains. Done. Okay, if you want you can erase the other parts. Okay, now I'm going to talk about shadow. Okay, so the light is coming from this direction, so that if you can see there, it is very light, then this is the mid tone, and then this is a dark tone, but in between there are different tones which mixed and show a different light or different shading. ये mix हुई हैं tones जिसकी वजह से अच्छी light और shading नजर आ रही है. Now the light is here, then the shadow should be here, like this. Okay, now I'm going to just simply use tonal here, and then I'm mixing a little bit of circularism and just showing you the shadow. Okay, obviously the nearest of shadow will be a little darker because the object is very near to the shadow, then the shadow will be a little dark.
and then as far as I am moving forward, the shadow will be a little light. I'm using tonal plus circularism. Tonal and circularism, okay? And then just mix it. That's it. Okay. If you can see the ball, it looks so good. थ्री बॉल सर्कल हमने बनाया था और उसको सिर्फ टोन्स के थ्रू कैसे 3D लुक दे दिया, ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। पहले आपने ट्राई करना है ये शेडिंग्स करना, और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रहे कि कहीं पे भी पैच नहीं है, कहीं पे भी पैच नहीं है, ऑल इज़ वेल ब्लेंडेड। सो आपने बिल्कुल ब्लेंड करके बनाना है, स्ट्रोक्स नहीं होने चाहिए, ओके। ये ट्राई करना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगी क्या करना है। और ये बॉल होगी अप्रोक्सीमेटली कोई 3 इंच बाय 3 होगी, तो इट्स अप टू यू, यू कैन मेक बिग बॉल एज वेल बट डोंट मेक अ वेरी स्मॉल बॉल, ओके। Okay, then see you in the next lesson. Goodbye.